Hello dear students, now let us start our exercise 4.13. This exercise is based on product. How can we do the product of this fractions digit? Okay, so here I am taking this one question. Look, how can you solve this type of the question? 5/6 multiplied by 8. This 8 is your whole number. So first you have to convert into fraction. How can you convert? If I am writing here any kind of the digit, suppose that 3, how can you make this number fraction? If you put here 3 upon 1, it means this number is your fraction. Understand now? Any kind of the whole number you can make into fraction. So here is this one whole number, so we want to convert into first fraction. So 5 upon 6 multiply 8 upon 1. Nothing is changed. If you are writing this way, this 8, if you are writing in this way, nothing is changed. Okay, now just simple step you have to do. Multiply this numerator to numerator 1 digit and denominator to denominator 1 digit. So 5 multiply by 8 and 6 multiply by 1. Now 5 multiply by 8 it become 40 and 6 multiply by 1 it become 6. Now the next step what you have to do, we want to make a lowest term of this number. So you know the how to find the lowest term, find the HCF of it in between of them. So here I using in this rough column I am finding the HCF is 2. After finding this HCF, just divide in this both number, then after you can see this one is your lowest term, 20 upon 3. Now you can convert this number into mixed fraction. You know it very well. How can we convert it? So here I did directly 6 2 upon 3. So understand this type of the question how can you do? Now look another one question. B 6 upon 11 multiply this 3. 3 is a whole number. So first we have to convert into 3 fraction like 3 upon 1. Now 6 multiply by 3. Now in denominator 11 multiply by 1. 6 multiply 3 it means 18. 18 11 को 1 से किया 11. Now convert into mixed fraction. Then 1 7 upon 11. Next question. 13 upon 38 upon 19. So we have to convert this one first. 19 को किस में convert करेंगे? Fraction में. You write the below of this 19 1. Now 31 multiply by 19 and 38 multiply by 1. Now you know it. In 19 table, if you learn, I don't know you learn or not. In 19 table, 38 is coming. How many times? 2 times. So if you understand the lowest term using a common factor, so what is the common factor in between of that 19? 19 के टेबल में आता है कितनी बार आता है? 1 टाइम आता है. ओके एंड 38 कितनी बार आता है 19 के टेबल में? 2 टाइम आता है. वी कैन यूज दिस वे ऑल्सो फॉर लोएस्ट टर्म. This is the another way which I am teaching to you how to cut this number. कैसे cut कर सकते हैं इन number को? Choosing one common factor in between of them. What is 19? So 19 divisible by numerator 1 digit also and denominator 1 digit also. So I can cut easily. 19 1 19 1 time and 38 is coming 2 time. So if you do more practice then easily you can understand this one kind of the method. So what the digit is remaining we will write as it is. Set 31 then multiply 1, next 2 multiply by 1. So that answer is 31 upon 2. Now divide it. If you divide then you will get here 1. So here I am dividing 31 divided by 2. 1 time 1 is remaining 11, 15. So 15 1 upon 2. This is the mixed fraction. Okay, this kind of the work you have to do in always rough column. Next one question. 3 upon 11 into 22. First we have to convert this 22 into fraction. This whole number को convert करना है fraction में. Okay, now numerator 1 digit से multiply होगी, denominator वाली digit denominator 1 digit से. Now this 11 and 22 they both are the coming in one table. In which table? 11 table. So we can cut this both number to 11. 11 से cut कर सकते हैं. How बेटा कैसे करेंगे? देखो इधर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22.
Understand now? 11 1 ja 11 one time, 11 2 ja 22. That's why its number, this number is cutting by 2 times. Now you can write here 3 multiplied by 2 upon 1 multiplied by 1. It means 6. If you don't understand this type of the lowest term, नहीं समझ में आ रहा है तो don't be nervous it. Here is a one more method. अगर तुम करना चाहो, you just multiply the numerator one digit and write like 31 को 19 से multiply कर देना directly. Here I am telling to you directly way. You can just multiply 31 multiply by 19 and then after divide with this 30. Directly multiply करके आंसर लिख. 589 upon 38. Now you can make a lowest term नहीं, डायरेक्टली या तुम नेक्स्ट सेक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा. यू कैन डू डायरेक्टली दिस टाइप ऑफ. अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो. नाउ डू क्वेश्चन नंबर E and F as a homework. I did till A to D. Now question number 2, same as the process. We have to replace this by word to multiplication sign. Question number 2, 7 upon 50 by word you can replace with this multiplication. If you replace, then it become, this is the whole number, so make a first fraction. Now 7 upon 60 multiply 420, 51 को 1 से क्या 50 आ गया. You can cut 0, only 0 we can cut. डोंट डू लाइक दैट. 23 अपॉन नीचे 2 आ रहा है, 21 आ रहा है तो तुम 2 से 2 कट कर दो बेटा. दिस इज़ द रॉन्ग वे. वी आर नॉट डूइंग, ओनली फॉर द जीरो कंसेप्ट वी आर डूइंग. केवल जीरो के लिए होता है. ऊपर अगर जीरो है, नीचे भी अगर इन अ वंस प्लेस इफ़ यू आर गेटिंग द सिमिलर जीरो देन वी कैन कट वंस प्लेस पे. नॉट अगर बीच में आ रहा है तो भी कट नहीं करेंगे. जैसे 405 आ रहा है, सम स्टूडेंट दे आर डूइंग लाइक दैट. यहाँ पे बीच में जीरो आ रहा है तो कट कर दो. नहीं मैम ने जीरो के लिए बोला था. नहीं बेटा, इन वंस प्लेस इफ़ यू विल लुक देन यू कैन कट इट. ओके. नाउ द रिमेनिंग डिजिट 42 अपॉन 5 divided in a mixed fraction, it is coming 82 upon 5. Understand? Now B1, first we have to convert into mixed fraction to improper fraction. Mixed fraction से improper में करा, multiply by की जगह multiply 3 upon 26. Now you can write like that 13 into 3 and 4 into 26. If you can now the process, make a lowest term. If any digit cut, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वन डिजिट में से कोई भी एक डिजिट एक टेबल से कट हो रही है तो अपन कट करेंगे. हियर आई कैन सी एक कट हो रही है. कौन सी कट हो रही है? 13. अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली कट कर सकते हो. मुझे याद है टेबल, दैट्स व्हाई आई कैन कट डायरेक्टली. 13 की टेबल में 13 आता है 1 टाइम और टेबल के टेबल में 26 आता है 2 टाइम. देखो एक टेबल 13 ली और 13 से दोनों को कट कर दिया. कट करा तो ये क्या हो गया? बच्चा के अपने पास में 1 एंड हियर 3 और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 2. इट मीन्स 3 अपॉन 8. ये किससे कट किया मैंने? कट बाय 13. ओके, फॉर रिमेंबरिंग दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर बिलो कट बाय 13 अ बोथ नंबर. नेक्स्ट वन 21 अपॉन 30. सो हियर I did directly now. 21 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 420 अपॉन 30. नाउ 0 से 0 कट कर सकते बिकॉज वंस प्लेस पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे. 42 में 3 का डिवाइड लगाएंगे. दिस डिवाइड इज गॉन कम्प्लीटली हाउ मेनी टाइम? 14 टाइम. सो दैट योर आंसर इज 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D, 3 2 upon 3 by 3 upon 22. नाउ we have to write together 11 upon and multiply by 3, 3 multiply by 22. Now you can see in numerator 3 is also, denominator 3 is also, then they are coming in one table. 3 3 के टेबल में आते हैं दोनों और 3 है. 3 के टेबल में 3 1 टाइम, ये वाला भी 3 1 टाइम आ गया. Now these are the number is also coming in one table, that is 11. 11 के टेबल में 11 आता है 1 टाइम एंड 22 आता है कितनी बार? 2 टाइम. So 1 multiply by 1 and 1 multiply by 2. It means 1 upon 2. If you do more practice now, then you can understand this